आ रही है आवाज? अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास टोटल वेरिएशन। Let f be defined on the interval ab and p be the partition of the interval ab such that p is equal to x naught x1 to xn. Then the total variation of f on the interval ab is denoted by VFAB or V of f from A to B and is given by V of f from A to B is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute del fi. Del fi is the difference which can be written as f of xi minus f of xi minus 1. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पर यहाँ आएगा, ये डिसेंड यहाँ होगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ होगा तो यहाँ पर। तो जैसे जैसे ये पॉइंट इस ग्राफ पर ट्रेवल करेगा वैसे वैसे जो y एक्सिस पर ये टोटल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करेगा इसको हम कहते हैं कि इट इज द टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन। जैसे जैसे पॉइंट आपका इस ग्राफ पर मूव करेगा वैसे वैसे जो लेंथ और जो पाथ ट्रेवल करेगा टोटल लेंथ उसकी जो होगी उस पाथ की y एक्सिस पर, that will be your total variation. So total variation of a function f is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute del fi, which is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute f of xi minus f of xi minus 1, where supremum is taken over all partitions of the AB. Now, if the total variation of the function f on the interval AB is finite, then the function is said to be of bounded variation. ठीक हो गया? Total variation of function f क्या है? That is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute of del fi. Now, if this total variation of the function f is finite, then we say that the function is said to be of bounded variation. ठीक हो गया? और अगर ये infinite हो गया फिर वो bounded variation नहीं होगा. If a function is of bounded variation, then this implies that function f is bounded. ये भी आपने note रखना है. Or note, it is to be noted that if f is a function of bounded variation, then there exists a positive number capital M such that supremum of summation I is equal to 1 to n del fi is less or equal to m. ठीक हो गया? The total variation of the function f is supremum summation I is equal to 1 to n absolute of del fi. If the total variation of the function is finite, then we say that function is of bounded variations.
Now let first result है हमारे पास, let f be a real valued and monotonic function on the interval AB, then prove that it is of bounded variations on the interval AB and the total variation V of f from A to B is equal to absolute of f of B minus f of A. ठीक हो गया, ये हमें प्रूव करना है. Let B be the partition of the interval AB. Total variation की क्या definition है? That is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n f of xi minus f of xi minus 1. This is your definition of total variation. ठीक हो. अब हमने ये शो करना है कि फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. इसका मतलब है कि हमें ये शो करना होगा कि ये जो चीज है दैट इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी. ठीक हो गया. अगर टोटल वेरिएशन फाइनाइट होगी तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. अब गिवन हमें क्या है, फंक्शन इज मोनोटोनिक. मोनोटोनिक मींस either it is monotonically increasing or it is monotonically decreasing. So हम केस 1 ले लेते हैं. Monotonically increasing. ठीक हो गया. A function is monotonically increasing, it means that f of xi minus 1 is less or equal to f of xi. ठीक हो गया. Now from इसको 1 कह देते हैं. From 1 we have supremum of summation I is equal to 1 to n ठीक हो गया. This is equal to supremum of summation को ओपन करें, आ जाएगा f of x1 minus f of x naught plus f of x2 minus f of x1 plus so on plus f of xn minus f of x n minus 1. ठीक हो गया. अब इन बिटवीन जितनी टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ f of x n minus f of x naught which is equal to. सर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की जगह एब्सोल्यूट नहीं आएगा? एक मिनट. सुप्रीमम ऑफ x नॉट, x n क्या होता है b और x नॉट क्या होता है a. इसका सुप्रीमम क्या होगा, दैट विल आल्सो बी f of a. ठीक हो गया. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो हमारे पास टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ f of b माइनस f of a. ठीक हो गया. अब एब्सोल्यूट ऑफ f of b माइनस f of a ये कांस्टेंट ही है. f of b एक नंबर होगा, f of a भी एक नंबर होगा, f of b माइनस f of a भी एक नंबर फाइनाइट है.
So this means that total variation is equal to finite. This implies that function f is of bounded variations. जी, आपने क्या सवाल किया था जी कि कहाँ पर मॉड मॉड ये मैंने लगाया, ये वाला मॉड? जी बोले जी, किसने सवाल किया था? सर वो ऊपर पूछ रही थी ये जो डेफिनेशन है सर, ये वेरिएशन की सुप्रीमम मतलब समेशन i इज इक्वल 1 to n, वो मतलब कि डेफिनेशन में तो वो मॉड है ना, तो वो पूछ रही थी कि यहाँ पे मॉड नहीं आएगा करली ब्रैकेट की जगह? वो कैसे आएगा, मैंने क्यों हटाया, चलो आप भी बताएं। जी बताएं जी, एनीवन? सर फंक्शन इंक्रीजिंग की वजह से? जी यस बिल्कुल, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इट मींस दैट f of x I minus 1 is less or equal to f of x I. This means that f of x I minus f of x I minus 1 will be a positive quantity, और पॉजिटिव हो तो हमने इसलिए मॉड को रिमूव कर लिया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर f of b minus f of a, तो ये फंक्शन चूंकि इंक्रीजिंग है, ये टर्म इससे बड़ी है, जो पॉजिटिव होगी तो हमने इसलिए दोबारा मॉड को इस्तेमाल कर लिया। दैट्स व्हाई हमने मॉड को इसीलिए रिमूव भी कर लिया और इसीलिए दोबारा लगा। वेरी गुड। केस 2 है, केस 2 जरा मुझे करके दिखाएंगे। मैंने मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग के लिए किया, आप मोनोटोनिक के लिए डिक्रीजिंग के लिए करें। मोनोटोनिक के लिए डिक्रीजिंग, वो क्या होगा जी? एफ ऑफ एक्स आई
जी हो गया। हो गया। जी बताएं यार, हो गया कि नहीं हुआ आपसे? खालिद साहब बोलो। अहमद हसन। लाल आज नहीं आया। लाल साहब बोलो। समझ रहे हो, आप सबने म्यूट किया हुआ है। यू आर ऑल एब्सेंट। एब्सेंट है आप इस वक्त। समरा, अहमद हसन, नबीरा रानी, अमारा, सदफ मकबूल, बिलाल, उस्मान, इकराम, खालिद, सब एब्सेंट हैं आप लोग।
ठीक है जी, it is monotonically decreasing. It means that total variation minus f of xi that will be equal to minus f of x2 minus f of x. In between terms सारी cancel हो जाएंगी, left with n, which is equal to supremum of f of a minus f of b, which is equal to f of b minus f of a. So this completes the proof. हमने यहाँ भी शो कर दिया the total variation of f from a to b is equal to mod of f of b minus f of a. So this shows that if function is monotonic, that is monotonically increasing or monotonically decreasing, then the total variation of the function is finite, which means that function is f is of bounded variations. Next हमारे पास theorem है कि जी let f be a continuous on AB. तो इसके प्रूफ को देख लेते हैं. That is, let f be a real valued and monotonic function on the interval AB, and we have to prove that it is of bounded variations on the interval AB, and the total variation of f from a to b is equal to absolute of f of b minus f of a. Let p be the partition of AB such that p is equal to x naught, x1 up to xn. Then we know that the total variation of f from a to b is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute of del fi, where del fi is equal to f of xi minus f of xi minus 1. इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब फंक्शन हमें गिवन है कि मोनोटॉनिक है, सो केस 1 हम ले लेते हैं, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, therefore f of xi minus 1 is less or equal to f of xi. So from 1, because ये टर्म इस टर्म से छोटी है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, सो हम मॉड को रिमूव कर देते हैं. So total variation of f from a to b is equal to supremum summation I is equal to 1 to n f of xi minus f of xi minus 1. So which is equal to supremum, अब इसका summation को ओपन करें, f of x1 minus f of x naught plus f of x2 minus f of x1 plus so on plus f of xn minus f of xn minus 1. In between जितनी भी terms होंगी वो cancel हो जाएंगी, हमारे पास जो term रह जाएगी that is f of xn minus f of x naught. xn हमारे पास b के बराबर होता है और x naught हमारे पास a के बराबर होता है. तो supremum of f of b minus f of a. ठीक हो गया. ये टर्म इससे बड़ी है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, हम दोबारा मॉड इसलिए लगा दिए. सो विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट f of b minus f of a. इसका सुप्रीमम भी यही होगा, सो f of b minus f of a आ गया. So this is a finite quantity, f of b minus f of a. एक finite quantity है, so this implies that total variation of f is equal to a finite quantity.
So now we know that if the total variation of a function f is finite, this implies that function is of bounded variations. Case 2 है जी हमारे पास. If f is monotonically decreasing, therefore अब monotonically decreasing होगा, monotonically increasing में तो ये था कि f of x I minus 1 is less or equal to f of x I. Monotonically decreasing में ये होगा कि f of x I will be less or equal to f of x I minus 1 whenever x I minus 1 is less or equal to x I. So from 1, अब 1 में चूंकि मॉड लगा हुआ है, अगर हम f of x I minus 1 को पहले और f of x I को बाद में लिख लें और माइनस आएगा तो माइनस मॉड में खत्म हो जाएगा. So from 1 we can write total variation of f is equal to supremum summation I is equal to 1 to n f of x I minus 1 minus f of x I. ठीक हो गया. So supreme summation को ओपन करें, 1 पुट करें f of x naught minus f of x 1 plus f of x 1 minus f of x 2 plus so on f of x n minus 1 minus f of x n. अब इन बिटवीन जितनी भी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी that will be f of x naught minus f of x n. ठीक हो गया. अब x naught हमारे पास क्या होता है, that is a, और x n हमारे पास क्या होता है, that is b. So we have supremum of f of a minus f of b. Now since function is decreasing, this term is greater than this term, so हम absolute लगा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा supremum of absolute f of a minus f of b. इसका supremum जो होगा that will also be यही सेम टर्म होगी. अब एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में हम आपको पता है कि अगर इंटरचेंज कर लें माइनस आएगा तो माइनस एब्सोल्यूट का खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f of b minus f of a, which is again a finite quantity. This implies that the total variation of function f is equal to a finite quantity. Now from definition, if the total variation of function f is finite, then this implies that the function is of bounded variations. So we have proved that if function is monotonic, then it is of bounded variations. That is, function is bounded of monotonic का मतलब क्या, monotonically increasing या monotonically decreasing. Both cases में function is of bounded variations, and total variation of the function f will be equal to absolute of f of b minus f of a. ठीक हो गया. बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में